How to avoid negative thoughts in your relationship. In this video, we will discuss how you can avoid negative thought patterns while you are in a relationship. Hi beautiful souls, मैं हूँ Vitika. Welcome to Divine Healing YouTube channel. When we are in a relationship, it's very often that we get negative thoughts. We think about अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर ये relationship टिकेगा कि नहीं टिकेगा, if my partner is loyal or not. So a lot of negative thought comes. And it is very common also because we face so many circumstances when we are in a relationship that it forces us to think in a certain way which we can call as a negative thought patterns. Let's see today how you can avoid that, how you can deal with that. Let's begin with number 1. Figure out the time when you get the negative thoughts. It can be during bedtime, when you go to sleep, before sleeping basically. It could be when you're doing nothing, you're sitting idly and you're just thinking about all negative things about your relationship. Number 3, it can be when you see other people, cheating or having some disgusting situation in their relationship. It tends to influence you and you get intimidated and you start feeling negative about the relationship. And lastly, after a fight. So these are time when you actually get your negative thoughts. When you figure it out that when it is, which time you actually get this kind of negative thoughts, it gets easier for you. बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि मुझे इसको टैकल कैसे करना है. क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे में आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. नो, इट्स नॉट. किस किस टाइम पे आपको आ रही है. अगर आपको रात के सोने से पहले आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो कुछ एक अच्छा सा म्यूजिक चला के आप सो जाइए. जो म्यूजिक आप दोनों को जोड़ता है. हम सभी के रिलेशनशिप में एक म्यूजिक होता है, एक गाना होता है ना. उस गाने को चला के लूप में आप सो जाओ या फिर उस गाने को सुनो बिफोर गोइंग टू स्लीप. Because this song, this music will bring all the memories, the good memories that you have with this person. So before going to bed, you actually conditioning your mind that I need to think good thing about this person. जब भी सोने के पहले negative thoughts आए, आप फटाक से एक अच्छा सा गाना चला दो, जो गाना आप दोनों को जोड़ता है. Number 2, when you are not doing something, अगर आप खाली बैठे हो, ऐसे ही नॉर्मली टाइम पास कर रहे हो, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट प्रेइंग. ऐसे अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखे, हार्ट पे हाथ रखे प्रे करो कि लेट्स नॉट दिस, आई एम नॉट दिस थॉट. ये थॉट मेरा नहीं है, ये मेरे रिलेशनशिप का थॉट नहीं है, ये फालतू का थॉट आ रहा है. मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. अगर आपको मेडिटेशन आता है तो आप मेडिटेशन करो खाली टाइम पे, कुछ ना करके ना. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपसे टाइम पास कर रहे हो, तो मेडिटेशन कर लो 5-10 मिनट. एक मुद्रा होता है, लाइक यू कैन होल्ड लाइक दिस एंड यू कैन डू द ध्यान. यू कैन होल्ड लाइक दिस एंड यू कैन डू ध्यान. दिस थिंग एक्चुअली मेक्स यू मोर कॉन्सेंट्रेटेड. ध्यान करने से वो जो खाली टाइम आपके दिमाग में शैतान बैठ के आपको बता रहे हैं ना कि ऐसा है वैसा आपकी रिलेशनशिप, वो चला जाएगा. नेक्स्ट थिंग, व्हेन यू सी समबडी and you start thinking negative about your relationship, that is the time you need to understand that we all are individuals, right? Different upbringing, different story. Your story and the person you are comparing with, the couples that you're comparing with, stories are completely different. So if they're fighting, if they're having some issues, it is not necessary that it's going to come to you also, because not all are same. We all are different species, right? So the comparison game stops there and there when you realize that you both are unique. With both, this couple is different from that couple. So you have to differentiate. You have to tell your mind that we are not this couple, we are different couple. So that time, negative thought will not haunt you. And lastly, after a fight. So it's common that we fight. Difference of opinion, difference of circumstance, your like, his like, her like. It might not match, but that's completely all right. Why? Because again, two unique people coming together and embracing that is important. When you fight, always remember, fight to solve a problem. If there's a problem for which you're fighting, if there's an issue, is a circumstance that you're fighting for, fight it to solve it, not to win that situation. So when you both play the team game, when you both realize that we are fighting in the team,
Okay? We are not here to get separated. Negative thoughts will automatically run away. Number 2, minimize interaction with people who gives you relationship triggers. कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसे कोलीग्स होते हैं जिनसे बात करके ना रिलेशनशिप ट्रिगर्स मिलते हैं. इन लोगों से आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको ट्रिगर्स देते हैं. ट्रिगर फॉर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स अबाउट द रिलेशनशिप. ये लोग कुछ कंपैरिजन लेके आएंगे. पता है उसके साथ वैसा हुआ था, उसकी बेटी ने ऐसा किया था, पता है मेरी वो ऐसी है ना, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड ऐसा करता है, गर्लफ्रेंड ऐसा करता है. These that and all, these terms, these are triggers. This will automatically bring triggers in you. Like मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा. एंड जैसे आपने सोच लिया कि ये स्टोरी मेरे साथ भी हो सकता है, बस नेगेटिव थॉट्स विल फॉर्म अ घोंसला इन योर दिमाग, एंड दैट विल बिल्ड अप eggs, and that will become birds of negative thoughts, and that will start flying in your brain. So stop or limit your interaction with people who gives you relationship triggers. The third way to avoid negative thoughts in a relationship is pat yourself, slap yourself the moment you start thinking. Consciously अपने आप में consciousness and awareness इतना ज़्यादा लेके आओ कि जिस moment आपको relationship के बारे में negative thought patterns are in, just give yourself a tap like this, like, what am I doing? What am I doing? This is the thought that I'm thinking about my relationship, about the person who I'm with, who gives me, who I love so much. उसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ मैं. What it is, this is called self awareness. अपने आप में awareness लेके आना, अपने thought patterns को अपने control में रखना, क्योंकि if you do not control your thought patterns, your thought pattern will control you. So before moving on to the last point, as I say always, if you love traveling, if you love watching travel contents, you can check out my travel channel. I'll give the link in the description. I make travel vlogs, travel videos, and solo travel adventures. I'm sure you will gonna enjoy it. So do check it out. The channel link is given in the description. Okay, moving on to the last point. When you get negative thoughts, focus on how to solve the thought that gives you negative thoughts. कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकालने में अपना दिमाग को लगाओ. अपने दिमाग को ऐसे घूमता फिरता सैर करता मत छोड़ दो, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट सोचेगा. उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं. तो सोल्यूशन ढूंढो, कुछ भी सिचुएशन है उसको सोल्यूशन ढूंढो. दोनों बैठ के सोल्यूशन निकालो. अगर दोनों मिलके नहीं हो रहा है, खुद निकालो. यूट्यूब वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ. Go to anywhere. If you want to talk to me, if you want to have a session with me about your relationship, that also is possible, because you can check out the description. I have given the details over there. आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम DM पे, and you can book your session. So the main point is you find a solution कि ये नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है. कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट के कुछ सिचुएशन की वजह से आपको ये थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है पास्ट में ऐसा हुआ है तो फिर फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है. तो चीज़ों को ना ऐसे कटोरे में बंद करके मत रखो. नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, उसको बंद मत करो, उसको इरेडिकेट करो. सो दिस इज ऑल. नेगेटिव थॉट्स को आप कॉन्शियसली हैंडल कर सकते हो अगर आपको पता चले कि कैसे, क्यों और किन किन सोर्स से आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. So that was today's video. Do leave a comment below your feedback about this video, and do subscribe my channel if you haven't yet. I'll see you guys on my next video. Till then, take care and be aware.